My dear boys and girls, today we are going to have GRE. GRE means Graduate Record Examination. Now we will try to start drill 1. Before I start drill 1, I would like to tell you some directions, rules and regulation. The first one is for each blank, select one entry from the corresponding column of choices. Full stop. Fill all blanks in the way that best complete the text. Is that clear? Now the question number 1. We are doing, my dear boys and girls, GRE, Graduate Record Examination. For those who are appearing MPhil or PhD exam, this is a very important for GRE student. Now let us start the question number 1. So there are, before I start, I would like to tell you the verbal section. Verbal section comprises namely three things. First, text completion. Second, sentence equivalence. And third, reading comprehension. And on top of that, essay writing. So again, I'm of the opinion there are three things in verbal section, and out of three things, the first one is text completion, which we are trying to have. Second has sentence equivalence, and the third one is reading comprehension. So let us start the question number first. Is that clear? In other words, it is also a fill in the blanks. तो मैं पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा. Just as different people can have very different personalities. Is that clear? So too can pets. ठीक है? Even those of the same species and breed possess varied. जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हम वी आर ट्राइंग टू हैव सेंटेंस completion, then it must be our first and foremost duty that we should try to find out the clue word, the trigger word, the word which will help you to find out your answer. If you do so, then GRE becomes very easy for you people. Now let us analyze, and I tell you the trigger word, the clue word, the word which try to take you to the word of your destination. Now let us analyze. Just as different people can have very different personalities, different people is our indication toward our answer, first indication. So too is also our indication toward our answer. तो चले फिर हम करते हैं. Just as different people can have very different personalities, so too can pets. Even those of the same species, breed, possess very dash. अब हमारे पास ऑप्शन है 6. 1 2 3 4 5 सॉरी 5. पहला है इनिशिएशन, आगाज करना. इम्प्लीमेंटेशन, इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड. एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मीन इट्स अ स्किल, ठीक है. और रैशनलाइजेशन, लॉजिकल थिंकिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. और अगला है टेम्पटेशंस. तो हमारे पास 5 ऑप्शन हैं. नाउ विच शुड बी योर आंसर? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू the word which try to take you to the word of your answer, which should be your trigger word, clue word, and which will try to indicate you towards your answer. And what is the word?
that is different personality. So too is also, that of a trigger word. So let us analyze. Just as different people can have very different personalities, is that clear, comma? So too can pets, even those of the same species and breed, possess टेम्परामेंट्स वेरीड टेम्परामेंट. और याद रखिएगा इनिशिएशन तो हो नहीं सकता, वेरीड पोजेसिव वेरी इनिशिएशन, और सेकंड possesses varied implementation. This is not our answer. Or to some extent we can say possess varied aptitude. ये किसी हद तक बात है, लेकिन this is not good because aptitude means skill which pet can have. It does not relate to clue in the sentence. ठीक है, तो हमारा फिर आंसर बनेगा टेम्परामेंट. टेम्परामेंट्स. ई इज अवर आंसर. ई शुड बी अवर आंसर. तो चलें फिर हम अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 7. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रस्ट्रेटेड बाय हर हस्बैंड्स लैक ऑफ डैश, Liza tried to motivate him to dash for greater things. For greater things. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, 2 ब्लैंक है, ए और बी, यानी ब्लैंक ए और ब्लैंक बी. तो इनमें से हमने 2 चूज करने हैं. इधर क्लियर? तो frustrated by her husband's lack of dash. Frustrated, is that clear, is our indication towards our answer. तो चले फिर हम करते हैं, frustrated by her husband's lack of initiative. Is that clear? Initiative is our answer. तो उसके बाद lassitude, eloquence, art of speech and oratory and things like that. This is not our answer. तो हमारा पहला आंसर है initiative. Initiative means ambition, a positive quality. Is that clear? तो अगला है, Liza tried to motivate him to strive for greater things. स्टाइव फॉर ग्रेटर थिंग. सो हमारा आंसर फिर ब्लैंक में जो आखिर में है, स्टाइव. दिस इज अवर आंसर. मैं रिपीट करता हूँ दोबारा. फ्रस्ट्रेटेड बाय हर हस्बैंड्स लैक ऑफ इनिशिएटिव. ठीक है. लिजा ट्राइड टू मोटिवेट हिम टू स्टाइव फॉर ग्रेटर थिंग्स. शी ट्राइड टू मोटिवेट इज अवर ट्रिगर वर्ड, क्लू वर्ड, विच ट्राइड टू इंडिकेट टूवर्ड्स अवर आंसर. सो हमारा आंसर फिर बनेगा इनिशिएटिव, बी और स्टाइव. इज दैट क्लियर? तो चलें फिर हम आगे चलते हैं, और अगला है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. एट द एजेस ऑफ द यूनिवर्स astronomers have discovered dash objects called quasars, which have given scientists the first direct dash of the existence of stars in distant galaxies. Is that clear? तो चले फिर हम करते हैं, and I would like to tell you this trigger word. At the edges of the universe, astronomers have discovered remote mean away object called quasars, which have given scientists the first direct, is that clear? Corroboration mean proof. Is that clear? Corroboration mean proof
और अगला मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ये हमने नहीं अभी की है, ये देखिए पहला ब्लैंक में है, पहला वर्ड है रिमोट, ठीक है। रिमोट मीन फार अवे, दे आर ट्राइंग टू सर्च द फार अवे थिंग्स, इज दैट क्लियर। और दूसरा इसका है कोरोबरेशन, कोरोबरेशन मीन प्रूफ। और अगला है पैरानॉर्मल, इज वेरी सिंपल वर्ड, विस्कोस, विस्कोस इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड स्टिकी थिंग, इज दैट क्लियर। और अगला है डिस्टॉर्शन, मीन किसी चीज़ को ख़राब कर देना। इंट्यूशन, नाउ आई टेल यू व्हाट इज इंट्यूशन। इंट्यूशन इज अ फीलिंग दैट समथिंग इज ट्रू बट cannot actually prove. You cannot prove intuition. This is something inner. So फिर हमारा आंसर बनेगा, I tell you the answer. At the edges of the universe, astronomers have discovered remote object. दूर के जो ऑब्जेक्ट है, their job is to find out the remote things. Object called quasars, which have given scientists the first direct corroboration. Corroboration means proof. Is that clear? तो और ये जो डिस्टॉर्शन है, दिस इज a change things and which is not consistent with the blank. So फिर हमारा आंसर बनेगा रिमोट एंड corroboration. रिमोट मीन दूर और corroboration मीन प्रूफ. तो चले फिर हम आगे चलते हैं, और ये थोड़ा सा मसला है आपके लिए, अब ठीक है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं. वी आर मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? इफ वन वर आस्क्ड, यू नो, आई वुड लाइक टू टेल यू द हिंट, द ट्रिगर वर्ड, द क्लू वर्ड. एंड व्हाट इज द क्लू वर्ड? इफ वन वर आस्क्ड. अब आप सारे मुझसे पूछेंगे कि वन, ये तो वन है, प्रोनाउन है. वन इज यूज ओवर हियर एज ए प्रोनाउन, नॉट एज एन एडजेक्टिव. इफ वन वर क्यों है भाई? जब हम कंट्रेरी टू फैक्ट की बात करते हैं तो ग्रामर ये कहती है कि वन के साथ वर आएगा. चलें फिर हम आगे चलते हैं. इफ वन वर आस्क्ड हु ट्रांसमिटेड द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ द ह्यूमन वॉइस, one might guess thee. One might guess thee. Is that clear? One might guess thee. हम ये कर रहे हैं. I would like to repeat once again. If one were asked who transmitted the first radio broadcast of the human voice, one might guess thee. One might guess thee. Renowned inventor, Giacomo Marconi, comma, but in fact, Marconi is also our indication towards our answer, but in fact the feat was accomplished by the much less well-known regional Fessenden. इज दैट क्लियर? तो चले फिर हमारे पास है 5 ऑफ. इनफेमस इज नॉट अवर आंसर, रिनोन्ड इज अवर आंसर, कॉन्टीजेंट, ठीक है, और कोजेंट और इंसिस्टेंट. सो हमारा फिर आंसर बनेगा रिनोन्ड. तो चले हम आगे चलते हैं. नंबर 5. इज दैट क्लियर? नंबर 5. Now let us start number 5. The difference in economic terms between a bond and a note is still observed by the United States Treasury, but in other markets the dash. The two terms have become unimportant and the two words are used dash. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है. ये कौन कौन सी ऑप्शन है? पहला है डिस्टिंक्शन बिटवीन, दूसरा सिमिलैरिटी ऑफ, तीसरा यूजफुलनेस
और ब्लैंक बी में स्टैटिस्टिकली, इंटरचेंजेबली और डिफरेंटली। तो हमारे पास फिर ऑप्शन बनती हैं 1, 2, 3, 4 और 4 फर्स्ट में है और 4 ही बी में है। तो फिर हमारा आंसर बनेगा द डिफरेंस इन इकोनॉमिक टर्म बिटवीन ए बॉन्ड एंड ए नोट इज स्टिल observed by the United States Treasury, but in other markets, the distinction between interchangeably, is that clear? Interchangeably, the two terms have become unimportant and the two words are used interchangeably. So हमारा फिर आंसर बनेगा पहला ब्लैंक बी में, ब्लैंक ए में है डिस्टिंक्शन बिटवीन और ब्लैंक 2 में है सेकंड में इंटरचेंजेबली। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे अगला है हमारा है थोड़ा सा मैं हटा ही दूँ इसको। चलें, अगला है नाउ नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे secretaries day was created in 1952 by Henry F. Clements, a public relation professional who dash the value and significance of administrative assistance in order to attract more women to the profession. तो हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 options. Is that clear? तो इसमें देखिएगा the word which is trying to be, that of a trigger word is Clemens. Is that clear? So now known as Administrative Professionals Day, secretaries is also our indication towards our answer. Day was created in 1952 by Henry F. Clemens, a public relations professional who is that clear? Who touted, T-O-U-T, touted means praise, ठीक है, the value and significances of administrative assistant in order to attract more women to the profession. So touted is our indication towards our answer. Touted is our answer. Second, it means praise. और admonish कहते हैं warn gently. That is not our answer. Our answer is touted. T-O-U-T-E-D. Touted means praise. Again, I would like to repeat. Now known as Administrative Professional Day, Secretaries Day was created in 1952 by Henry F. Clemens, a public relation professional who touted the value and significance of administrative assistant in order to attract more women to the profession. तो चलें फिर हम आगे चलते हैं।
हमारा अगला है when editing, ठीक है, manuscript, literary scholars must remain acutely aware. Acutely aware is our indication towards our answer. This is our triggered word. This helps us to find out our answer among extant version of the same work resulting from printing errors, editing demands or constant revision often make it, ठीक है, often make it daunting means difficult for scholars to publish truly authoritative. So our answer is then blank. सेकंड में जब आप जाएंगे तो ये है यानी ब्लैंक 7 taunting डिफ़िकल्ट, ठीक है, और ब्लैंक थर्ड जो है इसमें है अथॉरिटेटिव, ठीक है। तो दिस इज़ अवर आंसर, दिस शुड बी अवर आंसर। और इसके मैंने क्लू और इंडिकेशन सारा कुछ आपको समझा दिया। अब हम आगे चलते हैं, अगला हम 8वां कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? नाउ वी आर डूइंग नंबर 8 with a similar contrast. Contrast is our clue word, and CD is also, that of a trigger word, clue word. I would like to repeat once again. With a similar contrast between a partly cloudy sky and a dark street, the cover of the recent rock CD is our indication to our answer, ठीक है, towards our answer. CD evokes mean, ठीक है, bring forth, yearn to implore earnestly. Evokes a famous surrealist painting from the early 90s. तो हमारा फिर आंसर बनेगा evokes. इसका मतलब होता है ब्रिंग फोर्थ और टू इम्प्लोर अर्नेस्टली। और अगला जो है इसका डिसएन्चांट्स, डिसल्यूजन, मिसकंसेप्शन, हेलुसिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं, यानी हेलुसिनेशन, माइलेज भी हमको इसको कह सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ जो दूर से हमें सच नज़र आती है तो जब हम नज़दीक जाते हैं तो कुछ और है। तो दैट इज़ कॉल्ड हेलुसिनेशन, दैट इज़ कॉल्ड डिसल्यूजन, दैट इज़ कॉल्ड मिसकंसेप्शन। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। हमारा अगला है 9th है हमारा अगला। Although John F. Kennedy was known for his carefree flag football games, Gerald Ford should be dashed as our football president. He turned down offer to play for 2 National Football League teams in order to pursue a career in public service. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। रेलीगेटेड होता है बैनिश, देश से निकाल देना, और एब्रोगेटेड कैंसल, ठीक है, अन्नल्ड इसका भी मतलब कैंसिल होता है, क्रिटिसाइज, और अगला है अपोथोसाइड, इसका मतलब वन हु पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज फॉर समथिंग। सो हमारा फिर आंसर बनेगा ई, यानी आई वुड लाइक टू रिपीट, इसकी जो इंडिकेशन है दैट इज ऑल्दो द रोल जो है वन इज़ पॉजिटिव द अदर इज़ नेगेटिव। अगर हम ऑल्दो का इस्तेमाल करते हैं या 2 का इस्तेमाल करते हैं तो वन इज़ पॉजिटिव द अदर इज़ नेगेटिव। जिस तरह मैं ये कहता हूँ, दो ही वर्क वेरी हार्ड
is a positive, yet he could not get success is a negative. So positive और negative ये communicate करता है, तो that is our indication toward our answer. तो हमारा फिर आंसर बनेगा apothosized. apothosized. तो चलें फिर हम आगे चलते हैं नंबर 10. Number 10. Though many is also the same clue, same indication, same trigger word. It tries to indicate you towards your answer. Though is a indication, it's a clue word, it's a trigger word. Though is a trigger word, it's a clue word which help you to find out your answer. Though many dash endlessly praise his work, Don often wished for some honest criticism. Honest criticism is also our indication towards answer. Honest criticism is to our answer. और अगला है जो ये है पहला सिकफेंट, चापलूस को कहते हैं, यस मैन को कहते हैं, ठीक है, जो हमारे आजकल मुल्क में आम पाए जाते हैं. दो मैनी सिकफेंट्स endlessly praise his work, Don often wished for some honest criticism. Don wish some honest criticism is our indication towards the answer. हमारा पहला इंडिकेशन है दो और सेकंड है some honest criticism. तो हमारा फिर आंसर है सेकंड ए. पेडांट मीन शोई, बेनिफैक्टर इट्स वेरी सिंपल वर्ड, और एडवर्सिटी बुरा, वर्स, मैवरिक्स. इज दैट क्लियर? तो हमारा फिर आंसर बनेगा सिकोफेंट. तो चलें फिर हम आगे चलते हैं, नंबर 11 की तरफ आएंगे. ठीक है. द लूजिंग गेम शो contestant experienced a stage mix of dash and dash. Although she was disappointed that she did not win the $1,000,000 prize, she was still dash about returning to her normal life. तो ये था हमारा आखिरी. तो चले हम इसको करते हैं. अब इसमें जो although is our indication to our answer, it's a clue word, it's a trigger word which help you to find out your answer. The losing game show contestant experienced a strange mix of despondency. Strange mix is also our indication towards our answer. Despondency कहते हैं hopelessness. And elation. Although, now the word although is also our trigger word, it's a clue word, it's our word which helps us to find out our answer. It tries to indicate our answer. So although she was disappointed that she did not win the $1,000,000 prize, she was still euphoric. ये ए बी EUPHORIC बी, euphoric, very happy. ठीक है, very happy. So over here this sentence is tied to create a contrast. A clue word is a contrast. A clue word is a although, which is indication toward our answer, which is trigger to our answer. So हमारा फिर आंसर बनेगा. I would like to tell you once again, despondency mean hopelessness, नाउमीदी. और दूसरा है elation, ठीक है, to fill with joy. और euphoric mean very happy. So that try to create a contrast. And that of this word, although is trying to create a contrast. So if you try to master that of a grammar, particularly I am of the opinion many GRE students I see, so far as I know, they don't want to grip grammar. So if you try to grip grammar, it means you will get
you will be successful in your future prospect. So I stop over here. Now I would like to start the next, that of a GRE questions. So up till now we have done 11 questions.